Amit Bhardwaj also is with us. He's joining us from the ITO area. Amit, what is the situation that's looking out there? We cut to a live reaction coming in saying that the teams are working very hard, but is that visible on ground? Chati, I have moved to ITO Barrage area. Right behind me is the Yamuna River, the mighty Yamuna River right now, and the 32 gates of the ITO Barrage. What is happening here, Chaiti, is that while you can see the water is flowing with full force at the ITO Barrage, moving further towards Kalindi, but the problem here that Delhi is also facing on the left-hand side. I'll request Himanshu to pan the camera and to show you the visuals of the left-hand side. That's where the 5 gates out of 32, 5 out of 32 gates are still jammed. They are not operational, because of which water is getting blocked on those 5 fronts, and Indian Navy's help has been sought by the Delhi government, and Indian Navy's divers have been involved in this entire operation. Now, since last evening, united effort is being made by different departments and including the Indian Navy to make sure that they are able to desilt these gates, and after desilting the gates, there will be efforts will be made to make sure that the gates can be opened. If Himanshu will pan the camera towards the right, you will realize the difference. These gates that you are seeing, the water is gushing through these gates because it's open and there is no blockade in front of this particular gate, and that is why the water is moving forward. So 5 gates at ITO Barrage is completely jammed, and the administration had failed to open it so far. Yesterday, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal had said that 5 of the 32 gates are not working. There are attempts being made by different departments. Indian Navy has been involved, and he had also claimed that the management of this particular ITO Barrage or opening and regulation of the gates is being done by Haryana government. But right now, in times of crisis and a sort of a disaster that had unfolded in the national capital, the Delhi government had swung into action. Indian Navy's help was sought. So this is what the kind of work Delhiwalas would be looking for, not the kind of political bickering that is happening in the national capital, Chaiti. The situation at ITO, we have shown those reports that even on day 2, how ITO, the major intersection of the national capital, the artery road of the national capital, is still waterlogged. It is waterlogged because of the Yamuna's flood water coming through the drains, and getting mixed with the drain water, and it's completely inundated. The income tax headquarters of India is completely inundated. There are other offices as well which is completely inundated at the ITO Chowk right now. On the other side, what we are also seeing in the national capital, very unfortunate, Chaiti, is that complete political bickering is happening between the Raj Bhavan, between the Delhi government, the Delhi Secretariat, as well as the BJP and Aam Aadmi Party. Now, Saurabh Bhardwaj has also said that certain officers are not listening to the instructions of the Delhi ministers, and this is creating a lot of hurdles at the relief camps. Back to you, Chaiti. All right, thank you so much for joining us with those details. Our battery of reporters are tracking these developments rather closely. Flooded roads and scarcity of drinking water plagued parts of Delhi amidst an intense blame game between AAP and BJP over this unprecedented flood situation. East Delhi BJP MP Gautam Gambhir said he's not surprised that waterlogging and flooding in Delhi was bound to happen, and it's a result of 9 years of freebie politics. Meanwhile, Delhi PWD Minister Atashi launched a scathing attack on BJP-led Haryana government for releasing a massive amount of water from Hathnikund Barrage towards the national capital. हथनीकुंड बराज के विकिपीडिया पेज पे लिखा है, द बैराज डाइवर्ट्स वाटर इनटू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न यमुना कैनाल्स। इससे ज्यादा क्या है? ये अरविंद केजरीवाल ने नहीं लिखा विकिपीडिया पे। ये काम है हथनीकुंड बराज का, ईस्टर्न और वेस्टर्न कैनाल के अंदर पानी को रेगुलेट करना, डाइवर्ट करना। कि इन तारीखों में जब खूब पानी, लाखों क्यूसेक पानी दिल्ली में छोड़ा जा रहा था, ईस्टर्न कैनाल के जरिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा से बहने वाली कैनाल के जरिए पानी नहीं छोड़ा गया। ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब देना पड़ेगा हरियाणा को कि क्यों सारा पानी दिल्ली छोड़ा जा रहा था, क्यों यूपी और हरियाणा में नहीं छोड़ा जा रहा था, और
क्या अगर वहां पे पानी छोड़ा जाता तो क्या दिल्ली में जो बाढ़ आई है क्या उसको अवॉइड किया जा सकता था? इस पे तो जरूर जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। आपकी कारगुजारियां, आप लोगों ने यमुना में डिसिल्टिंग नहीं करी। वो जो डिसिल्टिंग अब करनी पड़ रही है वो अगर पहले कर लेते तो आज दिल्ली को ये दिन नहीं देखना पड़ता। दूसरा, आपने एक तर्क और दिया कि ईस्टर्न वेस्टर्न कैनाल के अंदर पानी क्यों नहीं छोड़ा गया, ये जानबूझकर हुआ। मुझे लगता है कि आप पढ़े लिखे कितने हैं मुझे नहीं मालूम, ये तो दिल्ली की जनता को पता होगा, लेकिन आपको अगर एक नदी, रिवर और कैनाल का फर्क नहीं पता तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। मेरा एक बार फिर सवाल यही है अरविंद केजरीवाल साहब से कि 3.5 लाख क्यूसिक पे बाढ़ क्यों आई, जबकि 8 लाख क्यूसिक पे बाढ़ नहीं आई थी, 3.5 लाख क्यूसिक पे क्यों आई, ये दिल्ली की जनता आज सवाल पूछ रही है। हथनीकुंड बैराज जो है, सबसे पहले तो इस पे कोई पानी को रोका नहीं जाता। यह एक बैराज है, इसके पीछे पानी को हम रोक के और जो इसमें से हमारी नहरें निकलती है, एक वेस्टर्न जमुना कनाल और ईस्टर्न जमुना कनाल, उसमें देते हैं। अगर ये हमारे पास इसका पूरा वो भी है तो इस पे थोड़ा सा आप समझा दें तो ज्यादा आसानी रहेगी। हथनीकुंड बैराज में ये हमारी रिवर यमुना आ रही है और यहाँ से हमारी WJC चैनल निकलती है। ये हमारी रिवर यमुना नीचे गई है और ये यूपी को जाने वाली ईस्टर्न यमुना कनाल है। ये दरअसल वो जो सहारनपुर को जाता है जिसके का फोटो उन्होंने लगाया, ये वो है। ये उत्तर प्रदेश में जाती है। तो इसमें आपने पानी क्यों नहीं छोड़ा? जब वो अपनी रिक्वायरमेंट देंगे तभी उसमें हम पानी छोड़ते हैं, बिना उनकी रिक्वायरमेंट के हम जबरदस्ती पानी नहीं छोड़ सकते। और दूसरा, क्या पानी के लेवल से भी इसका कोई कनेक्शन है? पानी के लेवल से जब हमारा 1 लाख से पानी का स्तर ज्यादा हो जाता है तो हम अपनी वेस्टर्न जमुना कैनाल और ईस्टर्न जमुना कैनाल दोनों को बंद कर देते हैं। जब इसका लेवल 1 लाख से कम हो जाता है तो हम फिर धीरे धीरे इनको खोलना शुरू करते हैं। तो फिलहाल सिचुएशन क्या है? फिलहाल सिचुएशन नॉर्मल है। हमारा जो पानी है वो बिल्कुल फ्लड जो है कम हो चुका है और यमुना में तकरीबन 50,000 पानी जा रहा है।